हाँ मैंने देखी थी एक हफ्ते पहले। It will help you find the mistakes in thinking. हम्म, I don't know it helped you or not. मेरा guess है. मतलब आप किस टाइप की वीडियोस कह रहे हो? अरे जो रिकॉर्ड करता जाता हूँ मैं ये. हाँ मैंने वो देखी थी। हो गया. वो तो आज भी देखी थी। कुछ कुछ पता चलता रहता है नया. हम्म। Alright, find the value. So I'll give you a lot of exposure today on different variety of questions. Okay. ओके सर। This is a very old type of questions. Have been has been asked multiple times. Almost every book has this. Tricky. कंफ्यूजन है थोड़ी। The 89 terms are getting multiplied. यस सर वही। Just a hint. See, sometimes tan 1 degree can be written as cot of. What is tan of theta equal to? ठीक है? हम्म। So let me tell you what is tan 189 actually. ये सही है? हाँ करेक्ट है बिल्कुल। So let's say tan 1 degree multiply by the last one. How will you write this? सर ये आपने पहले क्या लिखा है? 1/cot 89 डिग्री सर। ये जो लास्ट टर्म है. ये मैं ये वाला ये। You mean this? सर This is the first one. I picked up the first and the tan last. 1 डिग्री। Yes. ओके ठीक। I know tan 1 degree same as cot of 89. हाँ कह सकते हैं ये भी। And यहाँ पे मैंने जो first and last को उठाया, look what I've done. This is my first and this is my हम्म। last. ओके। What is tan 1 equal to? cot 89 डिग्री। So the first and the last got cancelled. हम्म। The first and the last. Similarly, if you see tan 2 from here and the second one from here, tan 88. हम्म। Right? So this will be what? Cot of 88 यस सर। and this will be 1 upon cot of 88. So even from the left hand side and the right hand side, if they come, they will cancel. So ठीक which है। means if you take a third from here and a third from here, it will also cancel. हम्म। So 44 from here and 44 from here. What will be the middle term? 44 From here फ्रॉम। हाँ। and 44 from here will cancel. 88 will go away. What is left? 45। लेकिन मुझे थोड़ा 44 वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। Okay. If you count these, how many are getting multiplied? ये आप लेफ्ट साइड में tan 1 to tan 44 डिग्री कह रहे होगे। Yes. और और लेफ्ट उस राइट साइड में tan 90 से 89.
89 है, तो से 89 से 46, 46, 46। तो ये दोनों इक्वल कैसे हुए? ये दिखा तो दिया। इफ आई पिक tan 1 हम्म। and I pick tan 89, this and ओ this। ठीक है, अच्छा, एक से ही सब प्रूव हो गया, ठीक है ठीक है। ट्रेंड आ गया ना कि हाँ उस तरफ से सेकंड सेकंड कैंसिल होता है, फिर थर्ड थर्ड भी कैंसिल होता है लेफ्ट एंड राइट से। ठीक सो है, आइदर समझ गया। फ्रॉम लेफ्ट और यू फ्रॉम राइट यू आर कैंसिलिंग फर्स्ट हम्म। लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट। गॉट इट? अंडरस्टूड। यस। These are some classic old time questions which have existed for ages actually. ओके। Okay, let's go to another one. Okay, so you have to find the value of cot of 54 divided by tan of 36 plus tan of 30, sorry 20 divided by cot of 70. ठीक है। So you should have an eye key. I am able to see that. हम्म।
हो गया? बस सर हो रहा. Right. You should be able to see this, that's all. Hmm. 2 आंसर are. ठीक है. Okay. So do this now. पांच पांच बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? Hmm. These are increasing by any hint? Hmm. Uh, Can I discuss? करना मेरे को समझ नहीं आ रहा. Okay, so what is first and last? Just look at this. Cos of 90 minus 5. Hmm. क्या बन जाएगा ये? First and last. Then take cos square 10 और इससे एक पहले क्या होगा? Hmm. तो how many will be there in all? 85 है और उधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, तो दैट मीन्स यू आर एक्चुअली लेफ्ट विद, इफ आई टेल यू पेयर में देखें अगर, तो यू विल हैव 42 पेयर्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट. Correct.
नहीं, how many? Sorry, 1, 2, 3 multiples. Sorry, so 17, right? So 8 Hmm. each. 8 each, right? So 8 from this side and 8 from this side. Okay. Agreed? So तो वो 8 बन जाएगा total. Hmm. Which will be the middle one? The middle one. So 1 to 17, 8 from this side and 8 from this side. So ninth, right? Correct. So essentially you're saying first term of AP is this. So cos square ninth. So 9 into 5. 5 के मल्टीपल थे 85 तक, तो 17 टर्म्स बनी ना टोटल एंगल में. समझ गया. Got it? Bit different, but understood. ठीक है, चलो. Okay. Now you have to find the value. Okay. So you have to find the value of sec theta. Okay, this is a separate question. तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ. Okay, so sec theta upon under root of 1 plus tan square theta plus cosecant theta divided by under root of 1 plus cot square theta. But situation is the x should belong to pi 3 pi by 2. You have to find the value of this expression, but x has to belong to a certain interval. So this is, for example, y is equal to, right? Maybe y function dependent on x. So theta actually Okay. belongs to, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको. क्या क्या वैल्यूज, कितनी वैल्यूज हो सकती हैं. थर्ड क्वाड्रेंट है बेसिकली. Hmm. फाइंड द वैल्यू ऑफ y, मतलब 1 2 3 4 जो भी है, फाइंड द वैल्यू. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है ना वैसे भी. तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक थीटा ही तो होता है. Yes, sir. बट थीटा इज इन विच क्वाड्रेंट? थर्ड. Correct. दैट इज ओनली कैच यू हैव टू यूज. सी इफ यू आर एबल टू यूज इट. इस लॉजिक से तो 1 + 1 2 आ जाएगा ना. Hmm. Okay. How will you use the third quadrant is the problem. What is the use of telling you it's a third quadrant? What is a message? Third quadrant में what's so special?
Any hint that comes to your mind? Third quadrant. Two looks very obvious. हम्म बट वो तो फिर उसमें क्वाड्रेंट क्या हुआ? That is first quadrant where the value of cos, for example, sec है वो cos होता है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos is what? नेगेटिव. करेक्ट अंडर रूट वाला तो प्लस ही रहेगा उसमें, तो यू कांट टच एनीथिंग, कांट डू मच. हम्म कुछ कर नहीं पाओगे ना उसमें तो. दैट हैज टू बी प्लस. ओनली थिंग इज योर न्यूमरेटर, हाउ डू यू एडजस्ट इट? आई थिंक क्वेश्चन में देर इज एन एरर. द वही क्वेश्चन, समझ नहीं आ रहा कुछ हाँ भी। क्वेश्चन में कुछ एरर है. आई थिंक यू हैव टू फाइंड either the maximum value or the minimum value something. There is something wrong with the question. Yep. Yes. I think they have to find the minimum. And the question should be that what is the minimum value of this function? Because the rule is that this is sec theta, right? And नीचे what you will get is cos theta. हम्म वैसे बता रहा हूँ, ठीक है? प्लस को secant theta upon sin theta. So this essentially is a situation of, if I take it on the top, this will become secant theta, cosecant theta, 2 times. दोनों सेम ही है. This is, sorry, this will become secant square. Right, this will become secant square. ये जो वैल्यू है cos की, what is the least value it can acquire? -1. At theta is equal to 3. Theta is equal to pi. हम्म So this will become, this is also cos. So this is -1 upon 1 square plus third quadrant. What is a value this can acquire? At pi, 0. करेक्ट So this value is -1, -1, -1. I think there is something wrong with this question. It is not correct. ओके Yeah, looks to be word, some keyword is missing. Otherwise, the value. वही हाँ इंटरवल में अगर आपको बोलेंगे तो योर आंसर शुड बी एन इंटरवल. करेक्ट If he is asking you add some theta, then why is he giving you the interval? Either he should इंटरवल tell के you, लिए हाँ हाँ, तो फिर y भी इंटरवल में लाई करेगा. कोई हम्म कीवर्ड thing has got mixed in this. Yeah. Anyway, okay. Now if you have to find the yeah, तो इससे क्लियर भी हो जाएगा ये. Supposingly you're asked to calculate the range, okay, range of a trigonometric function. So it is given 1 upon, for example, 5 sine x minus 6. Find the range. This function is bounded between which value and which value? That's the question. हम्म And the hint is that जो भी उसमें trigonometric function दिया है वो वहां से शुरू करो. Sin x lies between 1 and -1. Right? Multiply all by 5 and then make it same as the, then subtract 6 from both the sides. Sorry, subtract
ये -5 इसलिए करा है क्योंकि 6 बन जाएगा ये, सॉरी हाँ -6 करा, सॉरी 6। ठीक है। दिस इज -1। Now if you invert it, what will happen? Now you know where does this fluctuate? It fluctuates from -1 to -7. So question is, उसका उल्टा कहाँ से कहाँ तक fluctuate करेगा? If a number itself fluctuates from -1 to -7, where will the y fluctuate? That's all you need to find out. Reverse. Have we subtracted it correctly? Okay, let's see. This was -5, right? हम्म -11. So it's actually fluctuation is between -11 to. So if a number is there, z, it fluctuates between -1 and -11. Question is, what will be the fluctuation of 1 by z? And how will you link this to? मतलब उल्टा करना है ना अब सारा. यस सर। -1 by 11. तो रिवर्स हो गया. What is the least? So it is between -1 and -1 by 11. करेक्ट। Wait, have we done it correctly? Let's think. If you आंसर have ये a नहीं। no, no, yeah, if let's see, no, if you have a number which is -8, okay, if this is a number which is -8, okay, so -11, -8, and -1. I have not used my common sense, just rushing. So this is a 0, this is -8, and this is -11, and this is minus. So your number is between here and here. ठीक है, ये ठीक है। जो हमने निकाला था, राइट? सो नो, नॉट दिस, वी फाउंड दिस, दैट जो भी ये नंबर है, जो भी ये वैल्यू है, इट फ्लक्चुएट्स बिटवीन -1 एंड -11. If I do this, that this number is between, z lies between -1 and -11, right? If I do this, then where does 1 by, so question is, where does 1 by -8 reside? ठीक है? So to me it appears, if you have this as a value which is overall, for example, this value is -8, so y will become -1 by 8. Z is between minus, on the negative, invert it, 1 by z. So इसको दो, I'll just write it easily, right? I'm finding it difficult to write it. I will write it separately, okay, so that it's easy for me to understand. So this means z is greater than equal to -11 and z is less than equal to -1. हम्म Okay, so 1 by, if I have to do, so I will write it as z is 1 by z is greater than equal to, I have to invert it. If z is less than equal to -1, which is on the left hand side of this number, and I want to do 1 upon x, can I say 1 upon x is therefore greater than equal to -1? If I have this number 8 and I invert it, can I say -1 by 8 is greater than -1? I can, कह because सकते हैं। -1 by 8 is here, right? हम्म So I'm just using a logic in my mind. So I can also say if z is greater than -11, then 1 by z is less than equal to -11. हाँ यस सर। That means 1 by z is greater than
minus 1 which is on this side and 1 so मेरे को तो z why do I need 1 upon z I have not sorry inverted this ये गलती कर दी ना 1 by z should be less than equal to if z is equal to minus 8 what is 1 by z minus 1 by 8 right correct. इन्वर्ट करने से साइन बदल जाता है क्या इफ z is equal to minus 1 by 8 then 1 by z will be equal to how much 1 upon minus नहीं 8 कोई साइन नहीं माइनस, बदलता यार नहीं नहीं, इक्वालिटी में तो कम से कम नहीं बदल रहा so that means z lies between what 1 by z in our case it lies between minus 1 and minus 1 by 11 उल्टा कर देते हो ये है ना हमारा यस सर करेक्ट. ठीक है समझ गया. आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इन्वर्ट करने से बट ये वाला स्टेप जो है कि sin x is the biggest hint to find the let's say you have to find the range of this 12 sin theta minus 9 sin squared theta yeah 12 yeah रेंज निकालनी है if I take factors 3 sin theta 4 minus 3 sin theta इसकी रेंज निकालनी है हमें तो हमें तो ये मालूम है that sin theta is between 1 and minus 1 okay multiply this by 3 then put a negative sign then do subtraction from 4 अच्छा नहीं 4 कोई फ़ायदा नहीं हुआ so, मेरे ख्याल से इसको माइनस नहीं करते लेट्स कीप इट एज इज नाउ लेट अस सब्ट्रैक्ट 4 so I have to write 4 minus minus 3 इसकी तो आ गई साइन थीटा की क्या होती है 1 to minus 1 so these two are getting multiplied करेक्ट. so when you multiply them what will be the range the maximum and 3 भी है बाहर by the way okay अच्छा we have already taken care of 3 अच्छा there is a 3 sin theta right so 3 sin theta will lie between plus 3 and minus 3 so two numbers are getting multiplied right so if you see two numbers the range of the second number is between 1 ये 0 है मान लो is 7 and 1 the number is less than 1 and 7 is less than this so 4 minus 3 so the number is going in this direction one is this
and 4 minus sin 3 theta is less than 1 and going in, इसमें तो ओवरलैप ही नहीं है कोई, नहीं. और ये वाले में देयर हैज टू बी एन ओवरलैप टू डू अ रेंज. तो कई बार फंक्शंस के क्वेश्चंस में दे पुट ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस Hmm. and they will ask you, instead of x they will ask you something very different. Okay, so Okay, let's see क्या आता है. कोई ना कोई गड़बड़ लग रही ट्रिग्नोमेट्रिक है. फंक्शन की रेंज निकालने के लिए क्या. दोबारा सोचते हैं ज़रा. इफ द नंबर इज दिस देन आई मल्टीप्लाई इट बाय 3, then I write 4 minus minus 3 7. 7 is less than equal to 4 minus 3, 4 minus 3 1. So this, what does this show? That 4 minus sine theta is greater than 7. So 4 minus 3 theta is like this. And the other one is 3 sine theta, which is between 3 and minus 3. So this is a second function. It fluctuates from minus 3 to 3. And the other one, if I say multiply with 3, minus 3, 3 sine theta 3, 4 minus minus 3, because I have to get a 4 minus, so 4 minus sine theta. So 4, if, what does this mean? 7. So 4 minus 3 sine theta is greater than 7. And if 4 minus 3 sine theta is greater than 7, so it goes here. And the other one, which is the sine theta, this one, 4 minus 3 sine theta is also greater than, is less than 1. इसमें तो ओवरलैप ही नहीं दोनों में. नहीं. If I just look at this, okay, let's put it this way, that this function fluctuates between 7 and 1. Okay. इसके हिसाब से तो ये आ रहा है कि ओके, ये कह सकते हैं कि इसकी जो लोएस्ट वैल्यू है, राइट, वो हो जाएगी 1 पे. एक तो ये वाली हाईएस्ट वैल्यू पॉसिबल जो है, और एक इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू पॉसिबल है वो 7 है. Hmm. ठीक है, तो इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू अगर मैं बात करूं तो वो सबसे कम क्या हो सकती है? 1. हाँ, 1 हो सकती है. और मैक्सिमम क्या हो सकती है? ठीक है. ठीक और है. अगर मैं 3 साइन थीटा की बात करूं तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो वैल्यू फ्लक्चुएट्स बिटवीन -3 to 21. Hmm. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 minus 3 साइन थीटा 7. तो दो मैक्सिमा को मल्टीप्लाई कर लिया, फंक्शन 21 तक जा सकता है, मतलब प्रोडक्ट हो जाए तो. Correct. और यहाँ पे इट कैन बिकम -3. सो इसकी जो वाई क्यू वैल्यू है, दिस विल बी फ्रॉम -3 to 21.
ट्रिकी क्वेश्चन, यस सर। मतलब खासा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है. ओके, ओके, लेट्स से वी हैव टू फाइंड द रेंज एंड डोमेन. ओके, लेट्स पिक अप समथिंग. ये तो बहुत ही मतलब वो था, रेंज. Domain and range is an important topic for, you can see the quality. हम्म। Okay, so let's try this. One important thing you must know, and you will encounter it many times, is if you in a trigonometric function you get under root of 1 plus tan square x, right? हम्म। Under root, right? So you have to write it equal to, जैसे कि लिखते हैं हम. Let me give you a simple example. Under root of 1 minus sine square x. Write it as cos x, and then say cos x then fluctuates between 1 and minus 1. Okay, दो रूट होते हैं ना, प्लस माइनस. करेक्ट। So always write like this. You will see the value of writing like this once you encounter such a question. So say you have to find the range of a function which is under root of cos square x, okay, minus 6 sine x plus sorry, this is plus 9. Find the, sorry, this is cos. Let's say this is also cos. Yeah. So find the range. This is all are cos. हम्म। करो देखो. Give it a shot. Find the range. स्क्वायर पूरा करना है, हिंट बताएगा आपको. यू हैव टू कंप्लीट अस, राइट? सो आई कैन राइट दिस एज cos x minus 3 whole square. So what will this become? Cos x minus 3. इसका निकालना है मतलब आपको, राइट? नाउ यू नो cos x is between 1 and minus 1. माइनस, हाँ। Right, so subtracting 3, answer. अच्छा, yes, sir।
Got it? Yes, sir. Okay. Okay. So one important point is also on. I'll just share it with you. NCRT exemplar में what they have given is. Wait, let me. ये ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी लेंदी होती है, बिट लेंदी. Hmm. Okay, there is no shortcut. You don't have a choice but to practice. मुझे बहुत I liked it Okay. immensely. Wait, let me. I'm just opening the JEE. है भी सही इसमें. Okay, got it. All right. Let me just share one of the questions, and I will teach you through the question. Check this out. This is one thing you need to know. Okay, and you have to try this. Try करो एक बार. ठीक है. ठीक है. So you have to find the sum of some angles which belongs to this set. तो आपको ये सॉल्व करके कुछ एंगल्स आ जाएंगे. So that means like a quadratic there may be multiple angles that may satisfy this equation, but they have to be between this. Okay. So there is a set of angles which is this, right? Hmm. But your answer will be many angles. You have to find their sums with a condition all your angles have to be between this particular domain. पहले तो आप Okay. इसे सॉल्व कर लो, and first solve it and find those angles that satisfy this equation. And meanwhile, what I will do, I will share this with you so that your life becomes easy.
इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, सो आई जस्ट पेस्ट इट। ट्रीटेड एज अ क्वाड्रेटिक ना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा वेयर इट सेटिस्फाइज। क्वाड्रेटिक बना लो, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लो। अच्छा, समझ गया। क्वाड्रेटिक बन जाएंगे, नहीं थीटा के दो तीन वैल्यूज आ जाएंगी जो फिर ये वाला टेबल यूज करेंगे नीचे, द जनरल सॉल्यूशंस। जनरल सॉल्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नो दिस। ओके सर। मतलब रिपीट होती रहती है ना वैल्यू कॉस की साइन की, तो कितने पाई के बाद होती है, कि 2 पाई के बाद होती है, कब होती है? डू अ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। वही सर। आ जाएगा। मुझे थोड़ी खांसी है इसलिए मैं म्यूट पे जा रहा हूँ बहुत तेज। कोई बात नहीं।
Okay. And sin theta is equal to 1. Okay, so theta, look at the values of theta where it repeats itself, right? So two roots you're getting, two solutions. -1/2 पे कर रहा है. हाँ मतलब दो आ रहे हैं ना, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है. पहले तो बेसिक एंगल निकाल लो. सी दिस इज द रूल यू नीड टू रिमेंबर. एक मिनट इस come to this sheet. Okay, I'm just enlarging it. You can see this one. Yes, sir. This sheet. Read it very carefully now. Okay, and this is where whole crux lies. You have to memorize this sheet. If you find that sin theta is equal to sin alpha, for example, you get sin theta is equal to 1/2, then sin theta is equal to sine of 30, right? Correct. So what you have to write is theta. What are the angles at which theta gets the same value, which is half sine theta? So theta will be written as n pi plus minus 1 raised to power n alpha, which is pi by 6. So if you put any value of n, which is an integer, real value, okay? Put any value, you will get a repetition of 1/2 at that angle. For example, if put theta is equal to 1, Okay. sorry, n is equal to 1. n is an integer, right? ये भी n है. So n is equal to 1 डालता हूँ मैं, तो मेरा आता है पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर 1 पाई बाय 6 इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 6 is equal to 5 pi by 6. Correct. So if you do a calculation of sine of pi by 6, your answer will still be 1/2. If you put n is equal to -1, so theta is equal to -1 into pi plus -1 raised to power -1 into pi by 6 is equal to -1 into pi -1 raised to power 1 into pi by 6 is equal to minus pi by 6 is equal to -7 pi by 6. So even at -7 pi by 6 you will get half. So theta, what are those thetas where you can get sine theta is equal to half? This is the rule to be remembered. The general expression. Put the value of n on both these and you can find that theta. Infinite values, no limit. Okay, sir. In your case, if you see, you got sine theta is equal to -1/2. First find that alpha. ये सबसे पहली बार आता कहाँ पे है -1/2? Second quadrant. Sorry, third quadrant. In a third quadrant, if you write sine theta is equal to sine of, has to be 180 plus something. So let's say 180 plus 30. Sine of 210 degrees पे it is -half. So 210 is, if you have to convert it, it is pi upon 180. 7 by 6 pi. Right, so theta is equal to 7 by 6 pi is 1. But you know, the value of theta has to be determined with this formula. So what are the other thetas? 1 into pi plus -1 7 by 6 pi is equal to pi minus 7 by 6 pi is equal to minus pi by 6. Even at this, you will get the answer as -half. Sine of -30 is -1/2. So एक ये आ गया सोल्यूशन, दूसरा ये आया. अब मैं थीटा की -1 डाल रहा हूँ वैल्यू. थीटा इज इक्वल टू -1 इंटू पाई प्लस -1 रेज टू पावर -1 इंटू पाई बाय 6 इज इक्वल टू -pi by 6 इज इक्वल टू -7 by 6 pi. वन मोर वैल्यू, एक ये आ चुकी थी, एक ये आ गई, एक वैल्यू और आ गई.
बट हमें ध्यान रखना है अपने क्वेश्चन के अंदर थीटा कैन नॉट गो बियॉन्ड व्हाट 2 पाई एन -360 से 360 तक ही रहेगा बस, राइट? तो अभी तो 210 तक पहुंचे हम. इफ आई पुट n इज इक्वल टू 2 and I know theta is equal to 7/6 pi, theta is equal to 2 pi, n की वैल्यू 2 डाली है, प्लस -1 raised to power 2 7/6 pi is equal to 2 pi plus 7/6 pi. So this will become how much? This is 210 degrees and this is 360 degree. तो बढ़ जाएगा ना ये? Yes, sir. इसको छोड़ दो. So don't include n is equal to 2. So you just take n is equal to one value theta. You already got started with this. Then you got another value, which was this. And then one more. ये ध्यान से चेक कर लेते हैं एक बार. -1 into pi minus pi Correct. -1 raised to power -1 will become and this is, sorry, how much was this? 7/pi, right? गलती होगी कैलकुलेशन में. -pi -7, so this will become 13/6. So it will exceed -2 pi. 6 2s are, तो ये भी नहीं ले सकते आप. So you have only two values where sin theta follows your set. इसी सेट के अंदर है ना दो वैल्यूज, ये एक और दो, ठीक है? तो दे बिलोंग टू योर सेट. द अदर वैल्यू विच यू गॉट वाज हाउ मच? sin theta is equal to 1. Yes, sir. अब sin theta equal to 1, लेकिन theta should not be, where will this be? What theta? So sin theta is equal to sin pi by 2. So theta is equal to n pi plus -1 raised to alpha. ये जनरल रूल है. मैं n को 1 डाल रहा हूँ इसमें. आई एम लुकिंग एट दिस. n is equal to 1, theta is equal to pi plus -1 raised to power 1 into pi by 2 is equal to pi minus pi by 2. ये तो है ही हमारे पास. Yes, sir. कुछ नहीं निकला इससे. n is equal to 2 डाल रहा हूँ. theta is equal to 2 pi plus -1 raised to power 2 pi उससे by आता 2 है. is equal, ये फिर उससे बड़ा हो गया ना 360 से. हाँ. Cannot. Okay. So let me put theta is equal to -1 then. पॉजिटिव साइड में तो खत्म हो रहा है ना, कुछ नहीं हो रहा. तो n is equal to -1, तो theta is equal to minus pi plus -1 raised to power -1 into minus pi by 2 is equal to minus pi by 2 is equal to -3 pi by 2. ठीक है? Even if you do the calculation of sine of -3 pi by 2, this will be what? Minus sine 3 pi by 2 is equal to minus sine pi plus pi by 2. Third quadrant, minus of sine of pi by 2. आ गया. So this does satisfy. Yes, sir. So you have two more values, pi by 2 and -3 pi by 2. तो टोटल कितने वैल्यूज आई थीटा की जो इसके अंदर है? 4. Yes, sir. Look at the question. Then the sum of elements of S is, so which means, so what will you do? You will चारों write का सम करके. ये वाला ले लोगे, हाँ. ये वाला ले लोगे, 1 2, ये वाला ले लोगे, ये वाला ले लोगे, सबको ऐड कर दो आंसर. इन दोनों का क्या आएगा सम? 7/6 पाई और इसका आ जाएगा पाई. इन दोनों का 7 -1 हो जाएगा ना. 6 1 पाई हो गया. ये रहा ना. हाँ, वही बोला. इसका क्या हो जाएगा? -पाई बाय 2. -पाई पाई बाय 2 -3 पाई बाय 2. ठीक है. सम कितना हो गया? 0. यस सर. आंसर.
बट ये संभव तभी हुआ जब एनसीईआरटी का टेबल याद था. हम्म. If you don't know what is the meaning of the word general solution, you cannot solve this. And similarly, ठीक. you have to memorize for this also. ओके. ये दिख रहा है ये? सेकंड पॉइंट. ये वाला हम्म. और ये वाला. ठीक है. And look at this. It doesn't stop here. If it is square, if you see a square, right? हम्म. How will you tackle that? Look at this. If sin square theta है 3i, सब स्क्वायर में है, दिख रहा है? यस सर. 1 2, तो जनरल वैल्यू ये होगी. ठीक है. स्क्वायर की अलग है. हम्म. और अगर दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहे हो, sin theta is equal to sin alpha and cos theta is equal to cos alpha. If these are getting simultaneously satisfy करना है, तो what are those values of theta which will repeat are these. If they're individually, then their answer is this. Sin का ये है और cos का ये है. ठीक है. लेकिन अगर ये दोनों आ जाएं एक जगह पे, sin theta is equal to sin alpha and for the same angle cos theta is equal to cos alpha, then you have to write the general value. This is the general value. अंडरस्टूड. Right? तो ये जो general solutions of trigonometric equations है, this is a different topic altogether. मतलब एक अपने आप में ही एक टॉपिक है. ओके सर. बढ़िया था ना? इट वॉज नाइस टू हाँ. करने में बहुत. हम्म. General solutions of trigonometric. Okay. So I will now ask you to do one. ठीक है? सर हम नेक्स्ट क्लास में कर लें. चलो. I don't mind. I am a good teacher. I am ready to teach you. वो थोड़ा सा अब दिमाग में नहीं नहीं ठीक है. Whole day it's very difficult. I know that.